Limited. Our bronze sponsors, Mombasa Cement. Our fueling partners, Mufuko Group of Companies. Our printing partners, Elite Offset Limited. Match number 15. Game is going to be played between the NDOVU Crushers and Palora Dragons. Match officials for today's game, Shantilal Patel, Charles Kariuki, Third Empire, David Odiambo. Of NDOVU Crushers is going to call. Samaj is the call. Samaj it is. Thank you, Vraj. You've won the toss. What you'd like to do? Ball first. You're bowling first. This pitch had stayed there for a week. We're using it again. Looking at the pitch, it's a green pitch.
It's going to remain the same also in the second innings with the due factor. What do you think a good total would be on this pitch? We'd like to restrict them less than 120 runs so that it's easy for our batsmen to chase it down. Mind you, Palora Dragons, the previous game they played, they scored 200 batting first. Are you confident with your bowling unit? Yes, definitely. We are confident with our bowling. I think we'll restrict them to as least runs as possible. All right. Any changes in your squad today? Just one change. Ravikant sits out and Vishal comes in. So Ravikant sitting out for the NDOVU Crushers, Vishal Kerai taking his place. I'll have a few words with the captain of Palora Dragons, Lucas Ndanderson. Lucas, you've lost the toss. You've been asked to come and bat in. If you won the toss, what would you have done? Yeah, thanks Raj. We'll have batted first. It was a good toss for us to lose. We wanted to bat. Is it you want to bat first because you had the positive start in the earlier game? Yes, we had a positive start and we want the opposition to have the scoreboard pressure when they're chasing. Great. Any changes for your team? No, the team stays the same. We don't want to change the winning team. So. Ladies and gentlemen, that's it from the center. NDOVU Crushers have won the toss and elected to bowl first. Thank you. We start the game at 7 p.m.
Ladies and gentlemen, match number 15 for the SILVERSPREAD SCLPS Premier League 2023, proudly sponsored by our goal sponsors, SILVERSPREAD Pipes Marrow, our silver sponsors, Nairobi Timber Projects Limited, and the Broadwalk Mall, our silver sponsors, Lakshman Bai Construction Limited, our bronze sponsors, Mombasa Cement, printing partners, Elite Offset Limited, fueling partners, Mufuko Group of Companies. Match number 15 between the Palora Dragons and the NDOVU Crushers, whereby the NDOVU Crushers won the toss and elected to field. Bronze sponsors, Mombasa Cement, printing partners, Elite Offset Limited, fuel partners, Mufuko Group of Companies, media partners, Radio 44 and the Asian Weekly, man of the match partners, Nairobi Timber Projects Limited and Broadwalk Mall, highest number of 60s partners, Lakshman Bai Construction, media sponsors, Usher Locker India Private Limited and Propel Engineering Excellence, internet providers, Hirani Telecommunications, courtesy of Mansukh by Hirani. The opening pair for the Palora Dragons, Manish Kerai, Nirav Budia. Opening bowler, Rekit Budia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's play! It's a full ball, swinging away from Manish. A dot ball to start with.
Manish Kerai off the mark with a cover drive for a 4. Rikit bowling a bit fuller, batsman Manish utilizing it. A push on the back foot from Manish. Good call from his partner. They take a quick single. Nirav to face his first delivery. Way outside the wide guideline, signalled wide by the umpire. A cut shot from Nirav to wide of third man through the legs of the fielder. 4 runs to Nirav as well. He's off the mark with a boundary similar to Manish. This opening pair in their previous concert managed to score a partnership of 112 runs. Let's see how they perform today. A full ball, Ritik getting the bounce. Once again, Nirav Budia playing it to the third man region, wide of third man. They managed to get 1 run. That completes over number 1. Palora Dragons a total of 12 runs for no loss. Both batsmen on crease, Manish Kerai, Nirav Budia, playing on 5 runs each. Captain NDOVU crushes Vraj Patel, straight away bringing in a spin bowler into the attack, Satish Irani. He'll be bowling around the wicket to Nirav. Two dot balls to start with is Satish. Bowling it straighter to the batsman, not giving him any room to swing his bat. Once again playing it to short cover
Trushal, the fielder. 3 dots to Satish. Bowling the arm ball, Satish already using his variations very well. Nirav taking his time in the crease. Nirav trying to charge down, gets a single to mid-on. Good running by the 2 batsmen. Let's see what Satish has got for Manish. Both batsmen on crease. Love the slog sweep towards the mid-wicket region. Bowling it on the outside off. Manish playing it with full respect. That completes the second over. Palora Dragons have a total of 13 runs for no loss. Satish Irani, a brilliant over, giving out only 1 run. Dragons got 13 runs for no loss. Coming to bowl his second over and the third over for the Palora Dragons. The next over, Rikit Rikit Budia. What do you reckon? What do you think? What do you think? I don't know. Don't ask me. Tight ball. Very tight ball. You know directly. As a shot for a run out. A brilliant piece of fielding from the fielder. Direct hit. But Manish is just in. The batsmen need to take care of the running. Nirav needs to understand Manish is not a good runner, but he's a good hitter of the ball. Let him use his energy in scoring the runs by hitting the boundaries and not by running between the wickets.
Ricky trying to bowl on the pads of Manish. Has bowled it down the leg side for a wide. A fuller ball this time onto the wicket. Manish playing it to long on for a single. Batsman standing out of his crease. Yorker length from Ricket. A good over so far from Ricket. Just given 3 runs in his 3 balls. Even after bowling an extra wide. That's a wonderful cut shot from Nirav from the top of the off stump. Playing it wide of the extra cover fielder. Viraj making changes in the fielding, putting a deep extra cover to protect the boundary. Shot for a caught behind. A slow ball there. They thought there was an edge. Just looked like it passed very close to the outside edge. Nirav trying to play a similar shot to the previous ball. Away swinging delivery from Ricket. Good comeback after being hit for a boundary. 2 dot balls to follow. That completes over number 3. Palora Dragons have a total of 20 runs for the loss of no wicket. Nirav Budia playing on 11. Manish Kerai playing on 6. Current run rate 6.67. Projected score 133. Satish Hirani to continue his second over. Bowling round the wickets to Manish. It's up in there for a bit of a time. Manish playing it to mid-on fielder Vraj Patel. A bit of sloppy fielding as run down to boundary.
A check for a boundary. Signaled 4. This time around playing it at the square. One bounce, a boundary for Manish. Looks like the NDOVU Crushers have set a good field for Manish. They've got a mid wicket and a long on for Manish. However, he plays it with the wrist towards the square. Once again playing it to the square, this time round a ground shot. Managed to take 2 runs. Satish giving out 10 runs so far in his 3 balls. I think they were having a look at the line and length of Satish in his first over, utilizing it now when he's coming to bowl his second. This time round, outside the off, a wonderful shot there from Manish over the bowler. Once again, boundaries are raining here. Manish is a batsman who likes to stand and deliver. You can see very little movement on his feet. His stance is wide open, ready to charge the ball. A shorter ball this time, a bit of pace there. Played it to the mid-wicket region fielder Nikhil for 1 run. Nirav to face the last ball from Satish. So far, 15 runs off the over. What does the last ball got here? It's a fully ball towards his pads. Nirav Budia making no mistake. Playing it wide off mid-on fielder. That's a 4 once again. A great over for the Palora Dragons, getting 19 runs of this over. The total now moves to 39 runs for no loss after 4 overs. Manish playing on 21, Nirav playing on 15. Current run rate 9.75. Projected score from 195. As a change in bowling from the river end for the NDOVU Crushers, the captain himself, Vraj Patel, coming into the attack. Straight away putting in a slip fielder. Prasang Hirani, the slip fielder. How does Manish tackle the bowling of Vraj? Is he going to attack from ball 1 or let the 4 overs of Vraj go without a wicket? Vraj Patel, one of the Kenya national player. Left arm spinner. He's been punished by Manish over the covers. Manish playing it with the turn. He gets a boundary. Manish moves to 25 runs, just off 12 deliveries.
It's up in there. Is there a fielder below it? Is that Riket Budia? It's a drop chance in the bowling of Raj. This time round, trying to go against the spin, gets an edge. That would have been a game-changing moment for the NDOVU Crushers if Manish was taken. That's his leg up in there. He's somehow not confident, staying in the crease. After almost being stumped, Raj Patel bowls a bit shorter. Manish utilizing a cut shot, 4 runs, 10 runs of the over of Raj. Palora Dragons 49 runs for no loss after 5 overs. No, I think let him stay in. ऊपर दीवार वाले जा नीचे जा तू नीचे दे बॉलर चेंज लेफ्ट आर्म ओवर Bowling the next over, Tushar Wagani. Put you on down. No, it's okay. This okay. That's the first wicket for NDOVU Crushers. Budia goes out on 15 runs. In lift करे तो पक in third empire he lifted up that I saw clearly at least you should have gone for third just to clear our doubt Rahul Harish. left arm round to righty let's keep these two down yeah no I want these and lift down or in fact let him wait out demoted see if it's turning, then you bring him back. Leg? Yeah, one leg. Thank you. Come. Left arm round, 5 to play. Kishore, tu thoda komdo reji.
That's the second wicket for NDOVU Crushers. This over from Tushal Vagani 131 runs. being the most excited. He starts with the wicket of Nirav. Then there is a shout for LBW. And now Manish Hirani is run out. A good powerful throw. Incoming batsman Ankit Banderi. Replacing Manish is Ankit Banderi.
outside the off. Ankit Bandari trying to drive. That's a brilliant over from Tushal Vagani. A maiden wicket. At the end of 6 overs, Palora Dragons on 49 runs for the loss of 3 wickets. Taking the wicket of Nirav Budia and a run out from Satish to dismiss Manish. The total for Palora Dragons after 6 overs, 49 runs for the loss of 2. Umpire Shantilal signalling end of power play. The fielding team can now have a maximum of 4 fielders outside the 30-yard circle. Another change in the bowling for the NDOVU Crushers. Diven Varsani. Raj, can you put slips? बोलो नीचे ना रख ऊपर ले ले ऊपर ओने नीचे ना रख विशाल ऊपर ले ले नो राज नो So he can go down. So he just goes down. Misses everyone. A first ball, a sharp turn. Misses the batsman, misses the keeper. Look at the turn there. Kareem, can't do anything about that. We can't blame you. But a good turning delivery. Unfortunate 4 byes. Divan giving a bit of air, asking the batsman to play it up so he can get a chance for a catch. There we go, it's a cotton ball. Easy one there from Divan. Once again tossed it up, tempting the batsman to go over the bowler. Rahul Harish, a culprit. Brilliant bowling there from Divan Varsani. Replacing Rahul Harish to the crease, Hiren Kabaria striking at 152. He's got a high score of 102 not out in T20. Let's see what he's got there. Divan, brilliant turning there of the ball. Let's see how Hiren plays. Divan. So far, Divan not giving any runs except for the 4 byes and taking a wicket.
This ball turning quite a bit. Most likely like to leave the off stump. As a review, let's see what the third umpire has to say. And another wicket for NDOVU Crushers. So that the fourth wicket out for Palora Dragons. Devend Varsani on a hat-trick. So the incoming batsman is Shem Goche. Leg, please. Yep. Bowling right time over. One to come. So the hat-trick. Ball just guiding down to the point. Ankit Paneri trying to get a single. End of the over. 7 overs down. 53 for the loss of 4 wickets. Palora Dragons on 53 runs for the loss of 4 wickets. અయ్યા બચી ગયો સ્ટમ્પ વાગ્યો હતો એ લેઝી હતો નીચે જજે નથી જોતી રજુ let him keep Leave him there. Then he has to go round. પાછળથી થોડો કિશોર સાફી સાફી હા બરોબર This way. Yeah, you go. Ricky, move. You stay. Watch. There you go. Watch. Well done, Jabba. Let's come clean. Let's take.
Tushar Wagani bowling his second over. Sharp turn. Bringing back the ball in to Shem. Good pitching delivery by Tushar Wagani. With the previous over being a maiden wicket over. So far this over just considering 1 run. Trying to slice. Missing the ball so far yet. A good over. Missed the bat, missed the stump, missed by the keeper. So another review taken by the NDOVU Crushers, keeping the third umpire busy today. Pitching in line, hitting the back pad. Looks like the height was an issue according to the third umpire. So another successful over for Tushar Wagani, just giving out 1 run.
Lightly. Bowling right time over. Divan Varsani coming back to bowl his second over. So first over was a double wicket maiden. After 8.1 overs, Palora Dragons on 57 runs for loss of 4 wickets. Shame coming to face Divan Varsani, getting an inside edge back to the pad. Divan shouting out, but the umpire Shantilal Patel not interested. And that's another wicket of shame to Divan. Edgy and caught behind by Irfan Karim. Another wicket for Russia. Shem Gotle goes out on 0 runs. Supporters for NDOVU Croatians very much excited. They know the team has come strong up with the first partnership. Replacing Shem Goche is Yogesh Kabaria. Incoming batsman, Yogesh Kabaria. Thank you. Bowling right time over. 3 to come. At the end of 9 overs, Palora Dragons on 58 runs for the loss of 5 wickets. Ankit Banderi playing on 2 runs, Yogesh Kabaria playing on 1 run. Yes. Let me go. Leg. No, this is leg. Thank you. Left arm. Round. Tushar coming to bowl his third over. So far,
A good comeback by NDOVU Crushers. Yogesh Kabaria just planting his foot front-footed and trying to play late. And that's AG1 from Yogesh running down to the third man for a boundary. So that's a welcome boundary to Palora Dragons. Palora Dragons at 5.1 overs. They were at 49. At the end of 10 overs, Palora Dragons on 62 runs for loss of 5 wickets. So after the end of 10, they've only scored SCLPS Premier League Day-Night Cricket Tournament has been organized by Shri Kashyap Youth League, proudly sponsored by our gold sponsors, SILVERSPREAD silver sponsors, Nairobi Silver Projects Limited and Broadwalk Hall, silver sponsors, Lashubai Construction, who are celebrating 70 years in construction industry, bronze sponsors, Mombasa Cement, printing partners, Elite Offset Limited, fuel partners, Mombasa Group of Companies, media partners, Radio 44 and the Asian Week. with the 10, Man of the match 62 for 5. Palora Dragons have only managed to score 13 runs media sponsors, Usher Locker India Private Limited and Propel Engineering Excellence. after their first wicket. Telecommunications, courtesy of Mansukh Bhai Design. So 13 runs and 5 wickets down. So shout by Diven Varsani. The ball going down leg, turning into Ankit Banderi. Backward, backward. Diven bowling on the leg side, but not taken a chance by Yogesh, just putting it down and getting 1 run, giving back Ankit Banderi the strike. The flighted delivery to Ankit Banderi with no hesitation, just rotating the strike. Once again on the pads of Yogesh. A loud appeal by Diven. Once again the ball going down leg. Just 2 runs and 1 leg by of the over. So far, Diven Varsani giving out 4 runs, giving 3, 5 runs for the loss of 5 wickets. taking 3 wickets. Yogesh Kabaria, 6 runs. Ankit Banderi on 3 runs. Raji! Raj! Sleep, I don't need. He doesn't want to play. There's only the flip there. Bowling the next over, Tushar Wadani.
Tushar Wagani coming to bowl his last over. Short of an LBW. So the third umpire comes to play. Looks like pitching outside the off stump. Ball coming back to Ankit Bandreri. So once again, the decision reverted back by the third umpire. Another height issue comes in place. Hitting above the knee roll. And Tushar still putting in the pressure on the Palora Dragons batsman. With 3.1, only considered 5 runs and taken a wicket of the first over. Is bowling stump to stump so far. Is bowling outside of stump. Ankit Bandreri trying to go over covers but missing. Looks like the track is not easy to bat on. 120, 130 runs could be a good enough score for the Palora Dragons. Opening is fast with the signal from Yogesh. This passing experience to the youngster Ankit. Slice it hard rather than giving a guide. Yet another miss, and that's end of the spell for Tushar. 22 dots, 5 runs, 1 wicket with a run economy of 1.25. Vraj Patel back to the attack.
Yogesh just taking his time, planting the foot very early. Just showing the bowler that needs to take a full charge. Opening the face. So far, no runs of the over, 4 consecutive dots. So just a hesitation from the batsman. That is over. The covers fielder. Two easy runs to Yogesh Kabaria. So just 2 of the over, taking a total to 67 for 5. Palora Dragons on 67 runs for the loss of 5 wickets. Yogesh Kabaria playing on 8 runs. Ankit Banderi playing on 3 runs. Bowler change. Right arm round. Satish Shirani coming to bowl his third over, with the 2 overs in the power play considered 20 runs. So full toss. Ankit not taking the advantage. And just a single, giving back Yogesh Kabaria the strike. You want to go? Satish, do you want fine leg or mid wicket? Yeah. This guy. Go down. This guy. Mid wicket. So yet another single. Stay like that. So grounded shot by Ankit. Just rotating both the batsmen. The current run rate just below 6. Getting the bottom. Charging down. Back to the bowler. The bowler stopping it. Just giving out 1 run. To the mid wicket with Vraj Patel. At the end of 14 overs, Palora Dragons on 71 runs for the loss of 5 wickets. Ankit Banderi playing on 5 runs.
Yogesh Kabaria on 10 runs. Bowling change. Bowling right time over. Rikith Budia coming to bowl his third over and the 15th of his team. Just the inside edge. Yogesh charging down. You need to go, Vishal. You need to go straighter. Straighter. That is a good hit by Ankit Bandreri, and Tushar Vagani trying to stop but not reaching. This is a positive shot by Ankit Bandreri. The slight on top, bowling outside the off stump, just nearing the wide line. A slow delivery. Ankit judging it before. And 2 runs taken. Sensible, barabar. Lofting the 30-yard circle, the fielder out there trying to jump high but not getting the reach to the ball. And another boundary from Ankit Bandreri. That's a good effort by Nikhil Nathani. Another slow delivery and dropped by Nikhil. This time round straight to the hands and out of the bucket.
The score slowly climbing up to 83 for the loss of 5. Satish Irani coming to bowl his final over. Yogesh needs to put more effort. With only 5 overs to spare. So that a good catch by Raj Patel. Satish getting his first wicket of today. The victim is Yogesh Kabaria. Not getting the timing right. So Palora Dragons still have a hard hitter, the captain Lucas. And here it is, he's replacing Yogesh Kabaria. Can he manage to score a firing innings and taking the team to about 120 from here? With the youngster batting with him, his teammate Ankit Banderi needs to stay very positive. One leg. Yeah. Coming right some over to you for to play. Flighted delivery, hit back straight. Just 1 run. Coming run to you. That's a sweep shot by Ankit. Nikhil Nathani protecting the sweep shot. And the last ball of Satish's spell. That is hit hard up in the air, lands with no fielder, Divan not reaching, just giving away 1 run. At the end of 16 overs, Palora Dragons on 87 runs for the loss of 6 wickets. That was a swing hard by On 18 runs, Lucas Landerson
Lucas going to hit over the mid wicket. Raj. Towards you. Yep. We need fine leg. Short fine leg. Cut it. Yeah. There you going. Bowling left him round. Move round. Wicket. Bowling the next over Satish. is Raj Patel. Stay straight. Stay straight. So some good strategy by the captain Raj Patel, waiting for Lucas to come in. And the last two overs of his spell will be bowled to this last pairs, with the 17th and the 19th over. Sorry, the 20th over surely will be bowled by the captain. A flighted delivery to Lucas. Bowler. Raj. Slip. Why? Then let him stay down. So the NDOVU Crushers bowler stabilizing the innings, and that's a huge hit by Ankit. Raj, want him here and then he goes down. A full ball by Raj Patel. Ankit judging it very early, taking down the knees Wait. and over the deep mid wicket. Ankit Banderi trying to take 2 runs, Lucas sending him back. Satish, go behind. So far, a good over. With the 9 runs considered by Raj Patel. 17 overs, Palora Dragons got 96 runs to the loss of Innings wicket. Ankit Banderi playing on 25 runs. Lucas So 10 per over will land them 220 plus. Bowler change, right arm over. Raj. Come here. Dipen, do you want to spin mid wicket or here? You saw that. Sure. Stay mid wicket, sorry, go mid wicket. Divan Varsani coming to bowl his final over. So far best figures. bowling the next over, Divan Varsani. 4 runs, 3 wickets. To the mid-wicket region once again from Ankit, not connecting it well. But that region being the longer side of the field. So there are 2 runs. Shah, straight.
Diven getting his 4th wicket. Ankit charging down. That's another wicket for NDOVU Crushers. And Diven getting a right line. Turning in. Ankit Pandey goes out on 27 runs. With Irfan Karim keeping behind. It's not easy for the batsman to come back on strike. That's good judged by the Irfan Karim and getting a wicket. Incoming batsman Pushkam Vekaria. Pushottam Vekaria replacing Ankit Banderi. So another last hope for Palora Dragons. Just 1 run away from 100. Leg. Right, some of us ready to play. So just 1 run conceded. Diven Varsani just 1 wicket away from a 5-hole. And 100 runs come up for the Palora Dragons. And that's 100 for the Palora Dragons. With the 2 balls to go, will Diven Varsani get his 5-wicket haul? That's a huge hit by Lucas to the deep square leg. Lucas just judging it very early enough. And no hesitation, long boundary, and that's out of the park. So Diven just missing out on a 5-hole wicket. But so far best figures of Diven. 16 runs conceded, 4 wickets with an economy of 4. Lucas Nandasan on 13 runs. Pushkam Vekaria on 1 run.
So the 19th over shall be bowled by Ritik Budia. A slow one to Pushottam Vekaria. So the current run rate slowly climbing up to 6. A slow delivery, hit straight. Just getting the full toss right from Lucas. Lucas is a powerful batsman, likes hitting the ball hard. So but the fans getting excited. A slow delivery once again. And 2 runs to Lucas. Given up. And then once again 2 runs to Lucas. So far already 10 runs conceded with the 6 from Lucas. Lucas now 13 of 23. Lucas just taking his time. Moving away the legs. So the last delivery of the over. To the square, to the, is it mid-on? Yes, mid-on. At the end of 90 And another 6. on 125 runs to the loss of 7 wickets. Lucas Anderson on 29 So 14 runs conceded in this over, bringing back the total to 125. As I mentioned earlier, the last over will be bowled by Raj Patel. Bola change. Left and front. Oi.
Flighty delivery. Raj Patel to Lucas. Up in the air. A bottom-handed shot. Two runs once again. Irfan Karim disappointed. Fielders not working hard, not charging. Tell him he'll rest after the innings. And that's a stump out. Another wicket for NDOVU Crushers. Trying to give some room. 31 runs. And then hitting on the leg side. A very tight call by the leg umpire. And that's the end of the innings of Lucas. Raj Patel getting his first wicket of the innings. Replacing Lucas is another hard hitter, Ravi Vekaria. Maybe another 10 runs of the 3 deliveries could make a tight run chase for the NDOVU Crushers. And a healthy That's your leg. runs on the board by Palora Dragons. That's it, sir. Left arm round. Ready to play. So flighty delivery once again. Keepers, keepers. Just one run. And Pushottam come back to strike. Is it up in the air? And that's a good catch by the fielder Prasang. Yes, Prasang. So another wicket to Raj Patel, Another wicket for NDOVU Crushers. with the last batsman coming in, Hemang Garuda. Crushers of the Fire out on 2 runs. The incoming batsman, Hemang Garuda. So the last batsman That's a mid. Left arm round. 1 to and the last ball of the innings. Right. Right, let up. So the team, Palora Dragons, all out on 129 with the last run out by the bowler Raj Patel. Palora Dragons
So the Dover Crushers will need 130 runs in 20 overs. NDOVU Crushers require 130 runs to win. Ladies and gentlemen, we'll be back in 15 minutes for the second innings.
provided, Hirani Telecommunications, courtesy of Mansukh by Hirani. We begin the second innings in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's play. So both the brothers coming to play in, Satish Hirani and Prasang. So Lucas coming to bowl the first over, and straight away extra runs, buys and one for the over. So coming around the wicket, Opening batsman for NDOVU Crushers, Satish Hirani and Prashant Hirani. Bowling the first over for Palora Dragons, Lucas Ladazon. to the gully region. So those are 2 runs to Satish Hirani. Both of the youngsters straight away giving some good start at the required run rate of 6.3. The stoppage, Hiren Kabaria doing some sloppy fielding at the third man. So 6 runs so far of the 4 deliveries. Satish charging down. Lucas bowling a slow one. Not the good throw from Shame. The chance of a run out to Satish, ending the over of 7 conceded by Lucas. Crushers on 7 runs for no loss. NDOVU Crushers required 123 runs in 114 balls. Prashant Hirani on 1 run, Satish Hirani on 5 runs. Purushottam Vekaria coming to bowl the second over. Satish batting deep in the wicket.
First ball just missing out the line, bowling leg side, and extra runs on the board. With the score from Palora Dragons, have no choice just to bowl to the Lions and bring out the dot balls, extra runs. So a edgy shot by Satish, missing the slip fielder, and a boundary. Bowling the second over is Pushottam Vicaria. Just over the head of Nirav at the slip. Once again to the pads of Satish Irani, bringing back Prasang on strike. Just played one ball of the previous over. So good delivery to Prasang. Once again, slightly short of Prasang and the leg side boundary. Just giving enough time to Prasang to judge and guiding it towards the deep square leg. So that's a quick run between the wickets and some good cricket by Prasang, getting a boundary, giving out a single, going back to the other side. So Satish wanted to take a single, but Prasang sending him back. So 2 overs, 18 runs. So far, At the end of the second current run rate Crushers got 18 runs for no loss. being 9 runs of the over. NDOVU Crushers require 112 runs in 108 balls. Satish Irani playing on 10 runs. Prashant Irani playing on 6 runs. Lucas coming to bowl his second over. And that's a good stop by Hiren Kabaria. So the overthrow bringing back another extra run to Prasang, with Satish Irani back to strike.
That was the short one. Another pull edgy shot by Satish. And a boundary. Pushottam not getting a reach of the ball. A slow delivery by Lucas. Judging Satish early enough, walking towards him. Good energy, guys. Good energy. Looking good, guys. Don't leave it. Shabash. He's missing a chance. Shabash, guys. So good comeback by Lucas. After that, 3 and 4 runs, just giving out one. So the final delivery of the over. A slow delivery over the top and a boundary to Prasang. And the run rate goes up to 10 per over. At the end of 3 overs, the Prashant got 30 runs for no loss. Prashant Hirani on 13 runs, Satish Hirani on 15 runs. So the mid-on fielder just being more wider 102 balls. than expected. That's your leg. That's your mid. Changes bowling. Left arm round. Alafu na slope. Ama, unaonaje? Ha? Hii ende. Alafu, gani iende? Ile basi iende. Ile, wewe baki hapo. Luki, chini. Wacha ile ndo iende wewe baki. Alafu ujaze huku. Jipatie room. Ndio nasema, huyu angekuja huku mjaze huku. Huyu abaki ile super ndo iende. Bowling the next Sawa, hivi ni over, sawa. Hivi James sawa ni sawa. Noche. Hivyo hivyo. Shika eh. Basi pia. Safi, safi, Shebe. Yako. Ay. Driving it past the bowler Satish Hirani, rotating the strike. Ball staying a touch lower. Prasang trying to cut. Played it on the back foot.
towards the cover fielder. A good call. Take a single there. It's a wonderful cracking shot there from Satish. Shem Goche bowling it wide off the stumps. Rocking back, Satish. Cuts it to wide extra cover. This time round, Shem bowling it much straighter, giving no room to Satish. Once again, playing it from his back foot, straight to point fielder, no run. That completes over number 4. NDOVU Crushers 36 runs for the loss of 0 wickets. They require 94 runs to win in 96 balls. Satish Irani is playing on 20 runs. Prashant Irani is playing on 14 runs. Shabash, shabash, mana? Change of bowling for the Palora Dragons. Leg spinner Manish Karai brought into the attack. Manish, ball taru mana? Don thara Manish, shabash. Need up. That's the outside edge from Prasang. Nirav, the fielder, making a good effort. Satish playing it over the bowler towards long on. Gets a single. Manish. Playing it on his back foot, Prasang straight away giving a call for a single. Good running between the wickets. Good stuff, Manish. Lovely, Mana. So far, brilliant over from Manish, considering 3 runs only off the 4 balls. Satish going all over, up in the air, no fielder there. Good running between the wickets. 2 runs once again to Satish. He's trying to go for the big hit over the mid-wicket region for a ball that is turning away from him. Both the fielders are down on the leg side. Satish can play the ball with the spin over the extra covers. And that would be a great shot.
once again trying to play over the offside, just short of mid-off fielder. They take a single. NDOVU Crushers require 8 runs in 90 balls. 6 runs of the first over of Manish. NDOVU Crushers have a total of 42 runs for no loss after 5 overs. They require 88 runs to win in 90 balls at a required run rate of 5.87. Huyu asikuje. Luki. Huyu asikuje. Wewe kuja mbele saa hii. Wabaki tu. Saa Luki hapo ni sawa. Enda tu hivyo step mbili. Tukataru zile. Once again, ball turning away from Satish from the bowling of Shim. He's been punished on the back foot. A cut short. 4 runs to Satish Irani. He's making use of the power play. This time around, he's yoked himself. Shim giving a good reply to Satish. Straighter ball this time, Satish going across the line. Feeling guilty of that shot is Satish, dismissed on 28 runs. High hopes for the Palora fans who are cheering for the fall of wicket number 1. NDOVU Crushers 46 after 5.2. Incoming batsman Irfan Karim for the NDOVU Crushers, a left-handed batsman. Standing tall with his partner Prasang Hirani, who's well known as Akhtar. Ajaza ipande we. 45 alafu kuja huku. Shem setting a new field for Irfan Karim. Yogesh, kaa hapo huyo kuja hivi. Left arm spinner to a left-hander. Ball turning in. Let's see how Karim will play Shem. Bowling Shemi. A quicker and a much straighter ball from Shem, well defended by Karim. Played it on the on for a single. Karim off the mark with a single. One more from you, Shemi. A good comeback from Shem after being hit for a boundary in the first ball. He's taken the wicket of Satish and given 5 runs so far in his 4 balls. A lofted ball from Shem. Prasang trying to go hard at it, misses it. A brilliant over from Shem. 5 runs and a wicket.
After the end of 6 overs, NDOVU Crushers have 46 runs for the loss of 1 wicket. NDOVU Crushers require 83 runs in 84 balls. NDOVU Crushers requiring run a ball, 83 runs of 84 balls. The end of the power play. Umpire signalling end of power play. Coming to bowl is second over, Manish Kirai. Lovely, Manish. Vati Dipramanit, shabash. Pulling right him round. Bowling the next over, Manish Kirai. Way outside the wide line. An extra for Manish. He's asking Karim to play him over the cover region. That's it, Manish. That's the ball, Manish. A good Shabash, turning Mana. ball. Saru hai, Manish. Well defended. Rahul Harish, the keeper, asking the bowler to maintain that spot. Yako! That's up in the air. Karim trying to go over the on. Lucas, the man with the catch. Second wicket falling for the NDOVU Crushers. Irfan Karim is out, caught by Lucas at short mid-wicket. Karim playing a half-hearted shot. Looked like if he had gone for it fully, he would definitely have passed the fielder there. Jersey number 91, captain Palora Dragons, Lucas Dandasan. Once again with the replay, there you see Karim trying to go down, but chips it straight to the hands of Lucas. Replacing Irfan Karim to the crease, Trushal Vagani. Lakini for shame mtu anatakana ingie. Now the hal. Kya? Hey. Manish, same vastu sa. A thodok hard hitter hai pan same vastu. Right him round. Four to come. Lovely mana, lovely mana. Perfect line na karo, perfect, shabash. Taro hai, Yogesh. Taro hai. Manish, aap Brilliant over for Manish. Make it the last So ball, far shabash, giving mana. 1 run only of 4 balls, taking the wicket of Karim. Catch! Ah, yes! Good stuff, guys. Keep dotting, shabash.
solid, Sabas. Hey, બહુ સારો મનીષ. સારું હે મનીષ. ઓય તારો યોગેશ. સારું હે શાબાશ ભાઈ. Bowling a quicker and the wrong one, Manish. Turning the ball towards Prasang. Dot ball. 49 runs for the loss of 2 wickets. He's just given 2 runs and taken the wicket of Karim. 51 runs with 78 A brilliant over. Prashant Hirani on 16 runs. Tushar Bagani on 1 run. NDOVU Crushers, after the end of 7 overs, 49 runs for the loss of 2 wickets. They require 81 runs to win in 78 balls. Change of bowling once again. Hemang Ruda into the attack. Bowling the next over, Hemang Ruda. મના નીચે આલો. મના ન મૂકો યાર, એ બોલિંગ ના કરો. શાબાશ આમે. Bowling way down the leg side. Take an extra run off the wide. હોમવર્કની શાબાશ. Those are 2 wides. Come on guys, feet ઉપર હે. 51 runs for the NDOVU Crushers. Looked like an edge there. Not sure whether he played it. શમી શમી. Hemang Ruda લુકી. bowling. આઉટ આઉટ. That's a call for a run out. મના રેલો કોલ દે ને યાર. પછી કે તું ઉભો રે કેરો.
शाबाश शाबाश guys. Dot ball important है शाबाश. Unplayable ball है. Top stuff आमा. ત્યાં જ રાખજે. કવર સારું આમાં સ્ટફમાં આવશે પોઝિટિવ નાખેલો તું સારું આમાં પોઝિટિવ હે આમાં સારું હે પોઝિટિવ હે શાબાશ રવિ At the end of 8 overs, NDOVU Crushers on 56 runs for the loss of 2 wickets. NDOVU Crushers That completes over number 8. NDOVU Crushers, total of 56 runs for the loss of 2 wickets. મનીષ આપણે ડોટ જ કરવાનો વિકેટ They require શાબાશ આવશે મનીષ 74 runs to win in 72 balls. Manish to bowl his third over, so far picking up 1 wicket and giving out 8 runs. શાબાશ મનીષ Playing it on the square towards Pushottam Vekaria. 1 run. સારું મનીષ એકે ખોટો બોલ નહીં ડોટ બોલ જ જોઈએ that's it શાબાશ શાબાશ મનીષ ડોટ બોલ્સ મનીષ વિકેટની ડોટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે શાબાશ બરોબર હે મનીષ સાવ મનીષ કાંઈક રીઝનથી રન આવ્યો શાબાશ मनीष अगली गेंद लेकर के बल्लेबाज प्रशंग जो कि अपनी निजी 26 के योग पर खेल रहे हैं। मनीष के ये गेंद लेग स्टंप के ऊपर डाली गेंद थोड़ी सी अंदर आई गेंद हल्के हाथों से गेंद को खेला वहां पर खेलते ही निकल पड़े दोनों बल्लेबाज। 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ स्कोर
63 रन 2 विकेट के नुकसान पर 9वें ओवर की आखिरी गेंद मनीष के राय राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे मनीष माफ कीजिएगा। काफी छोटे रनअप के साथ अगली गेंद, इस बार गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर टिपका खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई। बल्लेबाज ने गेंद को वहीं पर दबोच दिया बिना किसी रन और नुकसान के। 9वें ओवर की समाप्ति, स्कोर 63 for 2। तुषार अपने निजी 2 के योग पर खेल रहे हैं और प्रसंग 27 के योग पर 25 गेंदों का प्रसंग ने सामना किया है। रिक्वायर्ड रन रेट जीत के लिए जो दरकार है वो है 6.09 की बकिया और करंट रन रेट के 7 के रन के साथ डोफू खेल रही है। 2 विकेट इस 63 रन के सफ़र में ज़रूर गंवाए हैं, पर फिलहाल स्थिति कंपैरिजन में डोफू की थोड़ी सी अच्छी, क्योंकि बकिया 66 गेंदों में 67 रन जीतने के लिए चाहे हेमांग, इस बार हेमांग की गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद की, सीधे बल्ले के साथ खेला, वहाँ पर शॉर्ट मिड ऑफ पे मनीष खड़े वहाँ पर गेंद को फील्ड किया, रन लेने का कोई चांस नहीं। अगली गेंद लेकर के इस बार लेग स्टंप के ऊपर डाली हुई गेंद थी, एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, वहाँ पर साफ नकार अंपायर ने, क्योंकि क्लीन लेग स्टंप मिस कर रही थी गेंद। घूमकर फाइन लेग क्षेत्र में खेलने की कोशिश इस बार प्रसंग जरूर कर रहे थे, पर गेंद बल्ले पर नहीं आई, सीधी पीठ पर टकरा। इस बार थोड़ी सी स्लोट में डाली हुई गेंद थी, सीधे बल्ले के सहारे खेलने की कोशिश की, बीट हुए, गेंद टिपका खाने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली और सीधी विकेट कीपर के दस्तान में अगली गेंद, इस बार थोड़ी सी शॉर्ट गेंद फिर से मनीष के हाथों में, वहां पर रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। वहां पर इस ओवर की 4 गेंद हेमांग डॉट डाल चुके हैं। अब अगली गेंद लेकर के निकले हैं प्रसंग के लिए। इस बार प्रसंग की ये गेंद, इस बार शॉर्ट गेंद थी, गेंद को कट किया है, गेंद कवर क्षेत्र में आ रही है, वहां पर बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक पर फील्डर खड़े थे, गेंद को फील्ड करके थ्रो देते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने टहलकदमी के साथ छोड़ बदला, 1 रन पूरा किया। इस ओवर में आने वाला ये पहला रन था 5वीं गेंद पर। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी हेमांग कर रहे हैं, 2 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए हैं। हालांकि अगली गेंद लास्ट गेंद आनी शेष है दूसरे ओवर की। बल्लेबाज तुषार इस बार इनसाइड आउट गेंद को खेलने की कोशिश की, खड़े खड़े गेंद थोड़ी सी उछली, टिपका खाने के बाद अंदर की तरफ आई। ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर डोफू क्रशर का 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। Proudly sponsored by our gold sponsors SILVERSPREAD Pipes Meru, silver sponsors Nairobi Timber Projects Limited and Boardwalk Mall, silver sponsors Lakshman Bai Construction while celebrating 70 years in construction industry, bronze sponsors Mombasa Cement, printing partners Elite Offset Limited, our partners Mabuko Group of Companies, media partners Radio 44 and Malaysian Weekly, manage the match partners Nairobi Timber Projects Limited and Boardwalk Mall, highest number of 60 partners Lakshman Bai Construction, media sponsors Asher Locker India Private Limited and Propel Engineering Excellence। अगली गेंद इस बार मनीष केराई की सीधे बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, वहां पर बल्ले के बीचों बीच आई गेंद, रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अगली गेंद लेकर के बल्लेबाज प्रसंग राइट आर्म राउंड दी विकेट आ रहे हैं। इस बार बहुत खूबसूरत गेंद, लेग स्टंप के बाहर टिपका खाने के बाद गेंद एकदम से अंदर की तरफ आई, स्वीप करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, समझ नहीं पाए, गेंद पेट पर टकराई, हल्की सी अपील वहां पर बॉलर की। अगली गेंद को कवर की तरफ खेला है, वहां पर गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है, खिलाड़ी उसके पीछे जा रहे हैं, लूज फील्डिंग वहां पर खिलाड़ी की, और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए।
थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, इस बार गेंद को थोड़ा सा पीछे जाकर खेला। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद थी, वहां पर खिलाड़ी थोड़े से वाइड खड़े थे, दौड़कर गेंद पर जब तक पहुंचते तब तक गेंद सीमा रेखा पार कर चुकी थी। इस बार फिर से शॉर्ट गेंद लेग स्टंप के ऊपर डाली हुई गेंद अंदर की तरफ आई, सीधे खड़े खड़े खेलने की कोशिश, बल्ले पर पूरी तरह से बीचों बीच आई, पर सीधी फील्डर के हाथों में रन की कोई गुंजाइश नहीं। इस ओवर में जो रन आए वो एकमात्र बाउंड्री है, बाकी की जो 3 गेंद है डॉट डाली है मनीष ने। इस बार परफेक्ट गेंद, जड़ों में डाली हुई गेंद, विकेट कीपर भी नहीं समझ पाए और गेंद सीधी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद बल्ले को छूती ही एकदम सी नीचे बैठ गई। विकेट कीपर जब तक गेंद को गैदर करने पहुंचते तब तक गेंद उसको पास कर चुकी थी और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, दूसरा चौका इस ओवर में। फिर से अच्छी गेंद इस बार मनीष की, लेकिन वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड, साइड में से गुजरती हुई गेंद, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो देते दोनों बल्लेबाजों ने एक आसान सा रन पूरा किया और इसी 1 रन के साथ 11वें ओवर की समाप्ति। स्कोर 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर 73 for 2। चौवन गेंदें इस इनिंग की आनी अभी शेष और जीत के लिए जो रन दरकार है वो है 57 रन। 6 की औसत से खेलना है यहाँ से NDOVU क्रशर को अगर ये मैच जीतना है पालोरा ड्रैगन्स के सामने। हेमांग अपने कोटे की तीसरी और इस इनिंग की 12वीं ओवर लेकर आ रहे हैं। सामने बल्लेबाज प्रशंग जो कि अपने निजी 37 रन के योग पर खेल रहे हैं। 36 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, गेंद को मोड़ दिया है, गेंद फाइन बाउंड्री की ओर जा रही है पर इतनी तेज नहीं थी, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक 3-4 गज अंदर गेंद को फील्ड कर लिया गया। जब तक गेंद फील्ड होकर के वापिस विकेट कीपर तक आती तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोड़ चेंज किया, 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक पर अब है। इस बार उसी अंदाज में डाली हुई गेंद, बल्ले के सहारे गेंद को मोड़ा है, फाइन लेग क्षेत्र, शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र में गेंद गई है। वहां पर डीप पर खिलाड़ी दौड़कर जब तक गेंद को आकर के फील्ड करके लौटाते, फिर से दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इसी रनों की दरकार है इस मैच को अगर इजीली ले जाना है यहाँ से NDOVU क्रशर को। कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो इतना नहीं। इस बार हवा में खेल गए, देखना है खिलाड़ी उसके नीचे आ पाते नहीं और खिलाड़ी उसके नीचे आ गए, लेकिन कैच ड्रॉप, साफ जीवतदान इस बार तुषार वाघानी को और 1 रन उस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। थोड़ी सी लेग स्टंप के ऊपर डाली हुई गेंद थी, थोड़ी सी शॉर्ट थी, घूमकर मारा गेंद को पर बल्ले पर पूरी तरह से नहीं आई। थोड़ी देर हवा में गेंद रही, वहां पर खड़े खिलाड़ी ने नीचे आकर गेंद को कैच करने की कोशिश की पर कैच वहां पर ड्रॉप हुआ। अगली गेंद लेकर के इस बार लेग स्टंप के ऊपर डाली हुई गेंद को क्लिक किया है, वहां पर गेंद फाइन लेग क्षेत्र में जा रही है, खिलाड़ी गेंद के पीछे जा रहे हैं और बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक गेंद को फील्ड कर लिया गया। फील्ड करके थ्रो देते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोड़ 2 बार बदला, 2 रन पूरे किए। इसी 2 रन के साथ स्कोर 79 रन 79 for 2। 12वें ओवर का खेल प्रगति पर। हेमांग इस ओवर में 6 रन अभी तक दे चुके हैं जो कि NDOVU क्रशर की ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड रन रेट है। पूरी कैलकुलेशन के साथ दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे क्योंकि जानते हैं कि इतना बड़ा रिक्वायर्ड रन रेट नहीं है। इस बार गेंद को कट किया था वहां पर कवर क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर तैनात फील्ड करके थ्रो देते तब तक दोनों बल्लेबाज
1 रन पूरा कर चुके थे। रवि वहां पर खड़े हैं। अगली गेंद लेकर के हेमांगरूडा इस ओवर में आखिरी बार, इस बार अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप के लाइन में डाली हुई गेंद थी। थोड़ा सा पीछे जाते इनसाइड आउट खेला गेंद को, कवर क्षेत्र में गेंद जब तक फील्ड हो पाती, रन लेने की कोई जल्दबाजी दोनों बल्लेबाजों ने नहीं दिखाई। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 12 ओवर की समाप्ति, 80 पे 2 NDOVU क्रशर। बकिया 48 गेंदों में 50 रन जीत के लिए दरकार यहां से NDOVU क्रशर को पालोरा ड्रैगन के सामने। Bowling change. Bowling right came over. 13वें ओवर की शुरुआत। अंकित अपने कोटे की पहली और इस इनिंग की 13वीं ओवर लेकर के बल्लेबाज प्रसंग के सामने। प्रसंग 40 गेंदों में 43 रन बनाकर खेल रहे हैं। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी प्रसंग ने आज की है, क्योंकि एक साइड पर पूरी तरह से इनिंग को संवार के रखा है। जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसी हिसाब से खेलते चले जा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि कोई जल्दबाजी करने की जरूरत है। अच्छी गेंद, इस बार गेंद को खड़े खड़े खेलने की कोशिश, वहां पर पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, सीधी उनके हाथों में, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। अगली गेंद लेकर के अंकित भंडेरी प्रसंग के लिए, इस बार लेग स्टंप के ऊपर डाली गेंद थी, गेंद को खेलने की कोशिश की, अंपायर का इशारा देखना होगा। गेंद जब तक वहां पर फील्डर पहुंचते, अभी तक गेंद के ऊपर फील्डर नहीं आए। तीसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज निकल चुके हैं। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, लेग बाय का इशारा अब जाके अंपायर का आया है। इसी 3 रन के साथ स्कोर 83, 2 विकेट के नुकसान पर। काफी खराब गेंद, लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर डाली हुई गेंद थी। पीछे जाकर खेलने की कोशिश जरूर कर रहे थे प्रसंग, पर बल्ले के बजाय गेंद पेड पर टकराई। फायदा की गेंद सीधी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर गई। उन दौरान दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन पूरे किए। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को हवा में खेला है थोड़ी देर के लिए, पर वहां पर एक टिपका खाने के बाद गेंद जब तक फील्डर के हाथों में आई तब तक दोनों बल्लेबाजों ने कोई रन लेने की ज़्यादा कोशिश तक नहीं की, क्योंकि देख रहे थे कि सीधी गेंद। इस बार गेंद को हवा में उठाया, 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे जा रहे हैं, देखना है। और इसी के साथ मनीष ने कोई गलती नहीं की। तुषार वाघानी की इनिंग का खात्मा। तीसरा विकेट NDOVU क्रशर का गिरा। मैं वही बात कर रहा था, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रन रेट है NDOVU क्रशर के लिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैच को लेके जाने की जरूरत थी। पर इस बार जल्दबाजी कर गए खेलने में, और गेंद ऑन द टॉप बल्ले पे आई और वहीं पर हवा में गई, गेंद लंबी नहीं गई। मनीष वहां पर खड़े थे, कोई गलती नहीं, एक आसान सा कैच किया और तुषार वाघानी कैच आउट होकर मनीष के हाथों पवेलियन की ओर वापिस आ रहे हैं 83 के योग पर। मेहुल नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं। Just Gori. Bowling right came over. Good to come. अंकित भंडेरी अपनी पहली ओवर में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। मेहुल आसानी अब की बार स्ट्राइक पर। सामने इस ओवर के सफल गेंदबाज अंकित भंडेरी बहुत छोटे के रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार लेग स्टंप के ऊपर जड़ों में डाली गेंद थी, सीधे बल्ले सारे गेंद को खिलाए, गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गई, वहां पर
खिलाड़ी वहां पर तैनात है, फील्ड करके थ्रो देते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने टहलकदमी के साथ 1 रन पूरा किया और इस 1 रन के साथ स्कोर 84 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बकिया 43 गेंदों में जीत के लिए 46 रन चाहिए। अगली गेंद मिडल स्टंप की लाइन पर डाली हुई, थोड़ी सी लंबी थी गेंद, सीधे बल्ले के सहारे गेंद को खेल दिया और बॉलर थ्रू में अंकित ने गेंद को उठाया बिना किसी रन और नुकसान के। 13वें ओवर की समाप्ति 84 पर 3 NDOVU क्रशर। Bowler change, left arm round. Bowling the next over, Shem Gupte. Ravi, yeah. Hama, point out. Hama, point, quick. Ujai side, right? South side. And up backward point. Ularu deep. On. Puja, start to 45. Shem, out of touch or NDOVU. Panga tu panga basi. Panga. Wacha huyo basi akae hapo. Elite ma. नए ओवर की समाप्ति, 14वें ओवर की शुरुआत सेम गोछे अपने कोटे की तीसरी ओवर लेकर के सेम आए हैं। बल्लेबाज मेहुल आशानी जो कि अभी क्रीज के ऊपर आए हैं, एक ही गेंद उन्होंने खेली है और सामना करेंगे शेम का। शेम राइट आर्म लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंद, इस बार थोड़ी सी उछली गेंद, थोड़ी देर हवा में थी पर इतनी लंबी नहीं थी। एक टिपका खाने के बाद फील्डर तक गेंद पहुंची। अगली गेंद लेकर के शेम, इस बार थोड़ी सी गेंद को घूमकर मारा है। गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में जा रही है, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, फील्ड करके थ्रो देते। दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोड़ बदला, 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया और इसी 1 रन के साथ 85 पर स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर के शेम, इस बार सामने बल्लेबाज प्रशंग, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार अच्छी गेंद, उतना अच्छा सीधे बल्ले के साथ इजीली खेला हुआ शॉट लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, फील्डर वहां पर फील्ड करके थ्रो देते। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोड़ बदला, 1 रन पूरा किया। शेम अगली गेंद लेकर के इस बार बल्लेबाज मेहुल के सामने, इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, परफेक्टली लेंथ के ऊपर डाली हुई गेंद, खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं था मेहुल के बाद। मजबूरन गेंद को सीधे बल्ले के साथ खेली, इस बार घूमकर मारने की कोशिश, चकमा दिया शेम ने, शार्प गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद, तिपका खाने के बाद एकदम से गेंद उछली, खड़े कट करने की कोशिश पर बल्ले के ऊपरी हिस्से के नजदीक से होती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। इस ओवर की आखिरी गेंद, इस बार फिर से घूम के मारने का प्रयास, हालांकि ओवर पिच गेंद जरूर थी पर टिपका खाने के बाद गेंद एकदम बाहर की तरफ निकली। बाकी का काम पीछे खड़े विकेट कीपर ने पूरा किया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। इस ओवर में सेम ने सिर्फ 2 रन दिए और इसी 2 रन के जरिए स्कोर 86 पर 3 विकेट के नुकसान पर। 14 ओवर समाप्त। Current run rate 6.14, required 7.33. Mehul Ashani on 2 runs, Prashant Hirani on 44 runs. Lovely, Gauri. Shash, Gauri. अगली गेंद अंकित अपने कोटे की दूसरी और इस इनिंग की 15वीं ओवर डालने जा रहे हैं और सामने बल्लेबाज प्रसंग जो कि अपने निजी 44 रन के योग पर खेल रहे हैं। 44 गेंदों का उन्होंने सामना किया। इस बार गेंद को खड़े खेलने की कोशिश जरूर, गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से में आई, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर जा रही, वहां पर खिलाड़ी तैनात बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक गेंद को फील्ड करके थ्रो देते। तब तक दोनों बल्लेबाज 2 रन पूरा कर चुके थे। इसी 1 रन के साथ 2 रन के साथ
3 रन के साथ, माफ कीजिएगा, 3 रन लिए बल्लेबाजों ने। स्कोर 89 फॉर 3। अगली गेंद लेकर के इस बार मेहुल है बल्लेबाज, अंकित भंडेरी गेंदबाज करेंगे। अभी अभी क्रीज के ऊपर आए हैं मेहुल। इस बार गेंद को अच्छी तरह से घूमकर उठाकर मारा है। वहां पर किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं और गेंद डीप पॉइंट और माफ कीजिएगा डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर सीधी 6 रनों के लिए। काफी अच्छा शॉट, उतना ही लंबा शॉट। जैसे ही मेहुल ने देखा कि गेंद ओवर पिच आ रही है, इस बार गेंद को खड़े खड़े खेलने की कोशिश, बीट हुए। गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। इस ओवर के रन हालांकि आ चुके हैं। मेहुल ने अगली गेंद पर छक्का मारी। इस बार सीधे बल्ले के सारे गेंद को खेला है। गेंद लोगों क्षेत्र में जा रही है। वहां पर फील्डर खैनात, थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई वहां पर। दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज निकल पड़े हैं और दूसरा रन भी पूरा किया। जैसे ही देखा कि फील्डर्स के हाथों से गेंद छूटी है, कोई मौका गंवाना नहीं चाहते थे मेहुल और दूसरा रन पूरा किया। इस ओवर में अभी तक 11 रन अंकित भंडेरी खर्च कर चुके। इस बार गेंद को कवर क्षेत्र में खेला है। फील्डर वहां पर फील्ड करके थ्रो देते, फिर से दूसरा रन। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। फील्डर ने वहां पर गेंद का वेट किया, गेंद थोड़ी सी धीमी जा रही थी उसकी ओर। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने पूरा समय लिया और 2 रन पूरे किए। इस बार गेंद को कट किया है वहां पर। गेंद शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में गई है। वहां पर खिलाड़ी तैनात। ओवर की समाप्ति, अच्छा ओवर गया इस बार दोनों बल्लेबाजों के लिए। इसी के साथ 15वें ओवर की समाप्ति। स्कोर 99, 3 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए सिर्फ 31 रन दरकार। 30 गेंदें अभी भी इस इनिंग की आनी शेष। 47 runs. सेम अगली गेंद लेकर के प्रशांत के लिए, प्रसंग से माफ कीजिएगा, सीधे वाले के साथ सीधे बॉलर थ्रू में खेला गेंद को। बॉलर थ्रू में बॉलर ने वहीं पर उठा लिया गेंद को। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। अगली गेंद सेम की। इस बार बल्लेबाज ने कवर की तरफ खेला, वहां पर रवि खड़े हैं, गेंद को फील्ड किया। रन लेने का कोई अवसर नहीं वहां पर। प्रसंग जो कि अपनी निजी 47 के योग पर खेल रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद, जड़ों में डाली हुई गेंद यॉर्कर लेंथ के ऊपर। उतना ही अच्छा दोनों बल्लेबाजों के बीच का तालमेल खेलते ही निकल पड़े और दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के साथ प्रसंग अपने निजी 48 के योग पर। मेहुल धीरे धीरे अपना बल्ला खोल रहे हैं। 11 गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रहे। इस बार उठाकर मारने की कोशिश, ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद, टिपका खाने के बाद गेंद और बाहर की तरफ निकली। बीट करती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के ग्लव्स में गई। रन लेने का कोई अवसर नहीं वहां पर। सेम इस बार गेंद को हवा में उठाया। गेंद काफी ऊंची गई है हवा में। देखना है दूरी तय कर पाती है नहीं। और गेंद सीधी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। जबरदस्त छक्का क्रॉस बेट्स के साथ ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद को बाहर से उठा लिया वहां पर मेहुल ने। और गेंद सीधी हवा में, काफी देर तक गेंद हवा में जरूर थी वहां पर। फील्डर ने कोशिश भी की नीचे जाकर, पर तब तक गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गिर चुकी थी। अगली गेंद लेकर के सेम गेचे इस ओवर में छक्का खा चुके। इस बार सीधे बल्ले के साथ खेलते ही दोनों बल्लेबाज निकल पड़े। जब तक
फील्डर के हाथों में गेंद पहुंचती तब तक दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ End of 16 overs, NDOVU Pressures on 107 runs for the loss of 3 wickets. NDOVU Pressures required 23 runs in 24 balls. Mehul Ashani 16वें ओवर की समाप्ति 16 ओवर 107 रन 3 विकेट के नुकसान पर जीत के लिए 24 गेंदों में 23 रन दरकार। अब दोफू क्रशर को काफी अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं। प्रसंग अपने निजी 48 और मेहुल अपने निजी 19 रन के योग पर खेल रहे हैं। उस 22 रन के योग पर माफ कीजिएगा 14 गेंदों में 19 रन बनाकर मेहुल आसानी खेल रहे हैं। इस 19 रन में मेहुल के 2 जबरदस्त छक्के भी शामिल। काफी जल्दी मैच पूरा करने के मूड में मेहुल आज ग्राउंड पे उतरे हैं। सामने प्रसंग जो कि एक छोर पूरी तरह से संवार कर खड़े हुए 48 गेंदों में 48 रन बनाकर प्रसंग हिरानी खेल रहे हैं और स्कोर है टीम का 107। 17वें ओवर की शुरुआत लुकास है गेंदबाज। लेफ्ट आर्म राउंड दी विकेट गेंद इस बार सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेला है। बॉलर को क्रॉस करती हुई गेंद सीधी बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है। वहां पर मनीष तैनात फील्ड करके थ्रो देते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया और इस 1 रन के साथ स्कोर 108 3 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर के लुकास प्रसंग जो कि अपने निजी 48 के योग पर खेल रहे। इस बार गेंद अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद, वहीं पर दबोच दिया गेंद को। वहां पर खिलाड़ी तैनात है फील्ड करके थ्रो देते तब तक रन लेने का दोनों बल्लेबाजों के पास कोई खास अवसर नहीं था और ना कि दोनों बल्लेबाजों के साथ कोई कोशिश की गई। प्रसंग अगली गेंद का सामना करेंगे लुकास की ये गेंद इस बार मिडल स्टंप के ऊपर डाली हुई गेंद चकमा देती हुई लेग स्टंप बिखेरती हुई निकल गई। पूरी तरह से ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद थी, गेंद को समझ नहीं पाए और सीधे बोल्ड होकर प्रसंग अपने निजी 48 रन के योग पर बोल्ड आउट होकर वापिस आ रहे हैं। इस बार गेंद पेड की लाइन में आ रही थी, बाहर से खेलने की कोशिश की। इस बार प्रसंग ने साफ बीट हुए और प्रसंग की इस 48 रन की इनिंग का खात्मा 108 पर गिरा है। ये चौथा विकेट डोफू क्रशर का। incoming batsman Nikhil Harish. निखिल जा रहे हैं नए बल्लेबाज। Safi Luki. Tusiwachilie Luki, tusiwachilie. निखिल आए हैं नए बल्लेबाज। काफी अच्छी बल्लेबाजी निखिल ने अगले मैच में की थी। आज 5वें विकेट के रूप में निखिल खेलने आए हैं। साथ देंगे मेहुल आसानी का जो कि अपने निजी 20 रन के योग पर मेहुल खेल रहे हैं नॉन स्ट्राइक एंड पर। लुकास
निखिल को इस बार बहुत अच्छी गेंद, फिर से यॉर्कर लेंथ की गेंद, काफी अच्छी गेंदबाजी लुकास कर रहे हैं सामने वाले छोर से। जैसे ही देखा कि अगली बार यॉर्कर डालने से एक जमे हुए बल्लेबाज प्रसंग बोल्ड आउट होकर वापस चले गए थे, तो निखिल अभी नए नए आए हैं तो जरूर दबाव बनाने की कोशिश लुकास की रहेगी। अगली गेंद लेकर के लुकास निखिल के लिए इस बार फिर से ऊंचे अंदाज में डाली हुई गेंद, खूबसूरत गेंद, सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेला, गेंद सीधी स्ट्रेट गई। वहां पर फील्डर मनीष खड़े हैं, गेंद को फील्ड करके थ्रो देते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया और इसी 1 रन के साथ निखिल ने अपना अकाउंट शुरू किया। अब के बार मेहुल आसानी लुकास के सामने, लुकास की ये गेंद इस बार बहुत अच्छी गेंद, ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेलने के लिए मजबूर किया और ओवर की समाप्ति, 17वें ओवर की समाप्ति, 109 रन स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर। बकिया 18 गेंदों में 21 रन डोफू क्रशर को जीत के लिए दरकार, 6 विकेट अभी तक सुरक्षित अपने हाथों में। Bowling the next over, Purushottam Bekaria. पुरुषोत्तम अपने कोटे की दूसरी ओवर, पहली ओवर में 11 रन जिन्होंने खर्च किए थे, इस बार काफ़ी लंबे अरसे के बाद अपनी दूसरी ओवर लेकर के पुरुषोत्तम आए हैं। काफ़ी अच्छा लंबा अनुभव क्रिकेट का पुरुषोत्तम के पास, उर्वराका के एक स्टार ऑलराउंडर है पुरुषोत्तम। बल्लेबाज सामने निखिल, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी निखिल कर लेते हैं। इस बार पुरुषोत्तम की यह गेंद निखिल के लिए, इस बार बहुत अच्छी गेंद, परफेक्ट डाली हुई गेंद, मिडल स्टंप के ऊपर पूरी लेंथ के ऊपर डाली हुई गेंद, थोड़ी सी बाउंस हुई गेंद। जब तक बल्लेबाज उसको समझ पाते तब तक गेंद उसको क्रॉस कर चुकी थी और विकेट कीपर के ग्लव्स में पहुंच चुकी थी बिना किसी रन और नुकसान के। अगली गेंद लेकर के पुरुषोत्तम, इस बार गेंद को हवा में उठाया, खिलाड़ी उसके नीचे आए उससे पहले गेंद ग्राउंड के ऊपर टिप्पा खा चुकी थी। काफी अच्छी रन इन द बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के लिए। थोड़ी सी वहां पर मिस फील्ड हुई और पूरा फायदा दोनों बल्लेबाजों ने उठाया। 2 रन निखिल ने पूरे किए और इसी 2 रन के साथ स्कोर 111 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। निखिल अब जाके अपने निजी 3 के योग पर पहुंचे हैं और मेहुल 16 गेंदों का सामना करने के बाद 20 के अपने निजी योग पर खेल रहे हैं। पुरुषोत्तम की ये गेंद इस बार निखिल के लिए, निखिल ने गेंद को कट किया है, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है। वहां पर थर्ड मैन पर, वहां पर खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के बिल्कुल लाइन के ऊपर खड़े हैं और गेंद को वहीं पर फील्ड कर लिया। तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास समय था 1 रन पूरा करने का और इसी 1 रन के साथ स्कोर 112 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। मेहुल इस बार सामना करेंगे पुरुषोत्तम की। अगली गेंद का 3 गेंदों में पुरुषोत्तम ने सिर्फ 3 रन दिए। इस बार इनसाइड आउट गेंद को खेला है कवर क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी जब तक गेंद को फील करके थ्रो देते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोड़ बदला, 1 रन पूरा किया और इसी गति की दरकार है
डोफू क्रशर को अगर ये मैच जीतना है तो, क्योंकि 14 गेंदों में रन जो जीतने के लिए चाहिए वो 17 है। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इस बार खड़े खड़े गेंद को कट करने की कोशिश, गेंद बल्ले को छूती हुई सीधी गोली की रफ्तार से निकल गई और विकेट कीपर की वहां पर कोई गलती नहीं। एक आसान सा कैच वहां पर विकेट कीपर ने किया और निखिल कोर्ट बिहाइंड होकर पवेलियन की ओर वापस लौट रहे हैं। आज निखिल ने कुछ खास नहीं किया अपनी टीम के लिए, हालांकि अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने अगली मैच में की। गेंद ने एकदम उछाल लिया, लेंथ के ऊपर डाली हुई गेंद। मेहुल की कोशिश थी कि कट करके थर्ड मैन की ओर खेला जाए, पर गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेती हुई सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में गई और नए बल्लेबाज किशोर भंडेरी अब गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए छठे विकेट के रूप में। देखते ही देखते 2-3 विकेट जल्दी गिर गए डोफू के। इस एक बार ऐसा लग रहा था कि प्रसंग और सामने बल्लेबाज मेहुल जो थे वही गेम पूरी तरह से ख़त्म कर जाएंगे, पर अच्छा सा कमबैक वहाँ पर पालोरा ड्रैगन्स के गेंदबाजों का, खासकर लुकास और इस ओवर में पुरुषोत्तम ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है, तो थोड़ा सा दबाव अब डोफू क्रशर के ऊपर महसूस हो रहा है। हालांकि इतना कठिन नहीं है मैच उनके लिए, पर ये क्रिकेट है, कभी भी मैच का रुख पलट सकता है। इस बार ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद, साफ वाइट। अंपायर ने कोई देरी नहीं की और एक्स्ट्रा के जरिए डोफू क्रशर को मिलता हुआ ये 1 रन, और इसी 1 रन के साथ 114 पर 5 विकेट के नुकसान पर 18वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर के निकले हैं पुरुषोत्तम। सामने बल्लेबाज किशोर, इस बार फुल टॉस गेंद को ड्राइव किया, वहां पर पॉइंट क्षेत्र में खिलाड़ी गेंद को फील्ड करके थ्रो देते, तब तक किशोर रन के लिए निकल पड़े थे। ओवर की समाप्ति 18 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 115 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 15 रन जीत के लिए दरकार और 2 ओवर और आने शेष है, तो काफ़ी मैच अगली ओवर में पता लगभग चल जाएगा कि किस रुख पर मैच जा रहा है। इस ओवर पर लुकास के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि 19वें ओवर डालने लुकास आए। अगली ओवर जो लुकास ने की थी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी और पूरी तरह से वहाँ पर बोल्ड आउट किया था बल्लेबाज प्रसंग को। अगली गेंद 19वें ओवर की पहली गेंद लेकर के निकले हैं लुकास। फुल टॉस गेंद इस बार हवा में खेल गए, ड्राइव करने की कोशिश, पर जिस तरह से चाहते थे उस तरह से गेंद नहीं आई बल्ले पर 1 रन का फायदा जरूर बल्लेबाजों को हुआ। छोर बदला, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने और इसी 1 रन के साथ स्कोर 116 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर के लुकास, इस बार मनीष से सामने, इस बार गेंद को ड्राइव किया, गेंद लोगों क्षेत्र में आ रही है, वहां पर खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात, थोड़ी सी सुस्ती दिखाई। दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज निकल पड़े और दूसरा रन पूरा किया। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। जैसे ही देखा कि गेंद पहली ट्राई पर नहीं आई है, हाथ पर थोड़ी सी छूटी है, पूरा फायदा दोनों बल्लेबाजों ने उठाया। 2 रन पूरे किए और इसी 2 रन के साथ स्कोर 118 रन 5 विकेट के नुकसान पर। लुकास अगली गेंद लेकर के मेहुल के लिए, इस बार मेहुल ने गेंद को उठाया, गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर जा रही है, वहां पर फील्डर से फिर से मिस फील्डिंग हुई। दूसरे रन के लिए फिर से निकल पड़े दोनों बल्लेबाज और फिर से दूसरा रन पूरा किया। रन आउट की अपील हालांकि हुई है, तीसरे अंपायर का इशारा थर्ड अंपायर की ओर प्रीफर किया है, तो यहां पर
तीसरे अंपायर की ओर प्रीफर किया है ग्राउंड अंपायर्स ने, तो टीवी अंपायर रन आउट को ज़रूर से परखेंगे। उसके बाद पता चलेगा कि मेहुल अपनी क्रीज पर सुरक्षित लौट चुके थे कि नहीं। वहाँ पर फील्डर के हाथों में पहली ट्राई पर गेंद नहीं पकड़ में आई, थोड़ी सी मिस हुई गेंद। जब तक दोनों बल्लेबाजों ने दूसरा रन लेने की कोशिश की, देखना है कि पहुंच चुके हैं बल्लेबाज कि नहीं। तीसरे अंपायर का डिसीजन, थ्रो जब तक विकेट के ऊपर लगती तब तक दोनों बल्लेबाज सेफ पहुंच चुके थे। नॉट आउट का इशारा थर्ड अंपायर का, काफी नजदीकी मामला था पर सुरक्षित अपनी पेच क्रीज पर पहुंच चुके थे मेहुल, तो 2 रन गिने जाएंगे स्कोर में और इसी 2 रन के साथ स्कोर। अगली गेंद लेकर के इस बार खड़े खड़े खेलने की कोशिश, ऑफ स्टंप से बाहर डाली हुई गेंद, पीछे से गेंद को खेलने का प्रयास कर रहे थे। गेंद बल्ले पर नहीं आई, ऊपर की हिस्से से होती हुई सीधी विकेट कीपर के ग्लोव्स में। स्कोर 120, 5 विकेट के नुकसान पर 8 गेंदें, 10 रन जीत के लिए चाहिए डोफू क्रशर को। मेहुल 20 गेंदों में 25 रन बनाकर खेल रहे हैं। अगली गेंद लुकास की, इस बार मेहुल ने गेंद को खेला है, वहां पर फील्डर से मिस फील्ड हुई। दूसरे रन के लिए सामने से किशोर निकलना चाहते थे पर मना किया मेहुल ने। 1 रन से संतुष्ट। पिछली कई गेंदों पर ऐसे देखने को मिला है कि पालोरा ड्रैगन्स की फील्डिंग में काफी हड़बड़ाहट महसूस हो रही है फील्डरों को। कई गेंद पहली ट्राई पर नहीं आती है हाथों में और उसका फायदा पूरी तरह से डोफू क्रशर के बल्लेबाज उठा रहे हैं। अगली गेंद लेकर के लुकास, बल्लेबाज किशोर भंडेरी के लिए। किशोर ने बॉल के ऊपर आकर खेलने की कोशिश की, वहां पर थोड़ी सी अपील कोर्ट बिहाइंड की जरूर, पर बल्ले के दूर से होती हुई, हालांकि बॉडी लाइन को छूती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के ग्लोव्स में गई। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। 19वें ओवर की समाप्ति और 20वें ओवर में अब जीत के लिए 9 रन चाहिए डोफू क्रशर को। टिपका खाने के बाद गेंद थोड़ी सी उछली, अंदर की तरफ आई गेंद, खेलना चाहते थे वहां पर किशोर, उसको बीट करती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के ग्लोव्स में चली गई। आखिरी ओवर देखना है कौन लेकर के आते हैं। पुरुषोत्तम हालांकि क्रीज पर आ चुके हैं। पुरुषोत्तम इस इनिंग की आखिरी ओवर डाल रहे हैं और उसको 9 रन से रोकना है। एक बार ऐसा लग रहा था कि एक आसान सा मैच होगा डोफू क्रशर के लिए, पर इतना आसान नहीं कि खड़े खड़े खेलते हुए मैच को जीता जा सके। सूरत हाल ये है कि 20वां ओवर शुरू होने जा रहा है और इस ओवर में 9 रन डोफू क्रशर को बनाने हैं अगर ये मैच जीतना है तो। पुरुषोत्तम गेंद लेकर के इस बार गेंद को हवा में खेला किशोर ने। खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं और उसके गेंद वहां पर ड्रॉप हुई और दोनों बल्लेबाजों ने फायदा उठाया, 2 रन प्राप्त किए। काफी लंबी दौड़ वहां पर खिलाड़ी ने लगाई थी, मिड विकेट के ऊपर पहुंच नहीं पाए। गेंद हालांकि उसके नीचे आ चुके थे पर कैच को नहीं गैदर कर पाए, गेंद वहीं पर गिर गई। काफी थोड़ा सा आगे निकल गए। इस बार गेंद को फिर से हवा में खेला है, गेंद ने गेंद बल्ले का बाहरी हिस्सा लिया, गेंद थर्ड में बाउंड्री को आ जा रही है, वहां पर खड़े फील्डर की मिस फील्डिंग और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। ये क्रिकेट है
किसी भी गेंद के ऊपर मैच का पूरा रुख बदल सकता है। कहां मारना चाहते थे, कहां पर गेंद आई, गेंद टिपका खा के उछली और गेंद टर्न हो गई। फील्डर आगे निकल गए थे, उसके हाथों में गेंद आई नहीं और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर निकल गई। 3 रन चाहिए अब सिर्फ डोफू क्रशर को 4 गेंदों में। पुरुषोत्तम गेंदबाजी अच्छी पर फील्डिंग में थोड़े से नाराज जरूर होंगे। पहली गेंद पर कैच छूटा, दूसरी गेंद पर मिसफील्ड हुई। इस बार ऑन द टॉप खेला है, वहां पर स्ट्रेट, वहां पर दूसरे रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज। दूसरा रन पूरा किया वहां पर रन आउट का खतरा मंडरा रहा है बल्लेबाज के ऊपर। देखना है थर्ड अंपायर का डिसीजन क्या होता है। काफी अच्छा शॉट था, वहां पर जल्दबाजी दिखा गई। इस बार दूसरे रन के लिए निकल पड़े पर वहां पर खिलाड़ी फील्ड करके सीधा थ्रो दे दिया बॉलर के हाथों में। पुरुषोत्तम ने कोई देरी नहीं की वहां पर, खास करके देखना है अंपायर का डिसीजन। थर्ड अंपायर का डिसीजन, रन आउट हुआ हुआ है वहां पर प्लेयर, और प्लेयर को काफी हद तक पता चल चुका था, ऑलमोस्ट बाउंड्री के ऊपर आ चुके थे। हालांकि दूसरे रन में रन आउट हुए हैं तो 1 रन जरूर अकाउंट में दिया जाएगा। छठा विकेट वहां पर रन आउट के रूप में गिरा है। 127 के योग पर 128, माफ कीजिएगा, नए बल्लेबाज व्रज पटेल खेलने के लिए गए हैं। 3 गेंदें जीत के लिए 2 रन दरकार। पुरुषोत्तम इस बार पिक करने की कोशिश कर रहे हैं फील्डिंग में पूरी तरह से। फील्डरों ने अगर थोड़ा सा साथ दिया होता तो मैच का रुख कुछ और होता अब, क्योंकि कैच छूटा पहली गेंद पर, उसका फायदा दोनों बल्लेबाजों ने उठाया। 2 रन लिए, वहां पर दूसरी गेंद पर मिस फील्डिंग हुई और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर गई। अगली गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव किया है, ऑन द ट्रैक गेंद को खिलाया मिड विकेट के ऊपर। दूसरा रन लेना चाहते से सामने बल्लेबाज फिर से देखा कि फील्डर गेंद के ऊपर हावी हो रहे हैं और इसी के साथ 129 स्कोर लेवल डोफू क्रशर का। जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए, 2 गेंदें आनी शेष। यहां से टाई हो चुका है मैच, 2 गेंदों में सिर्फ 1 रन चाहिए जीत के लिए। पुरुषोत्तम इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर के जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए। डोफू क्रशर को पूरी तरह से फील्डिंग को पैक किया है पुरुषोत्तम ने। जीत के लिए 1 रन, बल्लेबाज व्रज पटेल। पुरुषोत्तम की ये गेंद, इस बार गेंद को सीधे खेला है, वहां पर खेलते हुए दोनों बल्लेबाज निकल पड़े और इसी के साथ 1 रन पूरा किया और डोफू क्रशर ने ये मैच 4 विकेट से जीत लिया है। काफी गेम लास्ट मोड़ पर आकर मैच पूरी तरह से दोनों साइड से एकदम पैक हो चुका था, पर आखिरकार डोफू क्रशर कामयाब हुई, जीत हासिल की। 4 विकेट रहते हुए डोफू क्रशर ने यह मैच जीत लिया है।
काफ़ी अफरा तफरी वाला माहौल आखिरी ओवर में बन चुका था। आखिरकार NDOVU क्रशर ने जीत हासिल की और 4 विकेट से यह मैच NDOVU क्रशर ने जीत लिया। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे प्रेजेंटेशन नीचे ग्राउंड के ऊपर। तब तक के लिए कमेंट्री बॉक्स से सभी को सादर प्रणाम। कल एक और नए मैच के साथ हम अपनी पूरी टेक्नीशियन और कैमरा टीम के साथ हाजिर होएंगे। शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्टे सेफ। Você vai ler para ele.